Hello everyone. So today we are going to discuss about the cell. So what is cell? So cell is the structural and functional unit of life. Why they are called structural and functional unit of life? As we all know that group of cell form tissue. Tissue will form organ. An organ will form organ system. An organ system will form a complete organism. So cell is the basic unit of life which provide a structure to an complete organism. So that's why cell are called structural unit of life, because they are giving a shape to an organism. So why they are called functional unit of life? They are called functional unit of life because they perform basic function which are required to survive on this earth, like respiration, through which energy is produced, transformation of genetic information. So these are the some basic functions which are required to survive. So that's why cell is called structural and functional unit of life. So now we are going to discuss about the discovery of the cell. So how cell discover, who discovers cell? So a scientist named Robert Hooke found the dead cell in the bark of tree. This is the only major drawback of Robert Hooke, that he found dead cell instead of living cell. Actually, he took the bark from the tree and he observed a honeycomb like structure under the microscope. At that time, the electronic microscope are not present, so he observed under the normal microscope. So he found that small structure are repeating themselves. So he gave a name that cell to that shape, which means small room, which means small room. So he was the first scientist who discovered the cell and discussed about the cell. Now, another scientist named Leeuwenhoek found the living cell in the pond of water. So, who discovered dead cell? That is Robert Hooke. He is the only man who discussed about the cell in the era of 1665. After that, many scientists came, they observed under microscope, so they discovered different part of the cell. So the credit goes to Robert Hooke because he is the man who first discussed about the cell. So Robert Hooke discovered about the cell, and a living cell was discovered by the Leeuwenhoek. Now we are going to discuss about the some cell theory. So what is the cell theory? Actually, in this we are going to discuss about the cell. So all living organism are composed of cell and their product. इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बने हुए हैं और उनके प्रोडक्ट से। जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं इस पे, वेदर इट इज़ बैक्टीरिया और अ प्लांट और एन ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, एंड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द सेल. एक्चुअली व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? Cytoplasm plus cell membrane together called protoplasm. Later we will discuss about this cytoplasm and cell membrane. Actually they are the part of cell. All cell are basically similar in structure and activity. As we all know that the basic function and the basic structure of cell is similar, and we all know that why they are called functional unit, because they perform basic function which are required to survive on this earth. Now the major drawback of the cell theory is how new cell arises. नए सेल आते कहाँ हैं? सेल तो बन गए पर अब ये नए सेल आए कहाँ से? तो र्यूडोल्फ नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि जो नए सेल है वो पुराने ही सेल से आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ नए सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में.
जो अब नए सेल बनेंगे वो इन्हीं से ही अराइज होंगे। अगर ये सेल डेड हो जाते तो ये नए सेल को जनरेट कर देते और हमारी बॉडी में ऐसे करके नए नए सेल आते रहते हैं जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रीज़न होते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमिनिस्ट सेलुला ई सेलुला, डेट मीन्स न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नए सेल आपके आएंगे वो कहाँ से आएंगे बेटा, पुराने सेल से। कहाँ से आएंगे, पुराने सेल से। अब हम डिस्कस करेंगे सेल साइज़ के बारे में। बैक्टीरिया देखो कितना छोटा होता है, माइकोप्लाज्मा कितना छोटा होता है, ओस्ट्रिच। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं इस अर्थ पे, ऑल द लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल. So the size of all their living organism is vary from species to species. Now the size of the bacteria is 3 to 5 micrometer, and mycoplasma is the smallest cell on the earth. Egg of ostrich is the largest cell on this earth. Nerve cell is the longest cell. So actually it is a little bit detail about the cell size because they vary from species to species. Now different type of cell are present on the different type of cell are present. Actually they vary from shape to shape also. Disc shape, columnar shape, cuboidal shape, thread like shape, polygonal, irregular. The disc shape हो गया ऐसे, क्यूबोइडल हो गया ऐसे, इरेगुलर हो गया कि कोई शेप ही नहीं है, थ्रेड लाइक हो गया, पॉलीगोनल शेप हो गई किसी चीज़ की, ठीक है, जिसके बहुत सारे कॉर्नर है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल क्या होते हैं। सो ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल। देखो केमिकल रिएक्शन मतलब सेल के अंदर कुछ कंपाउंड है, उनके बीच क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। उन रिएक्शन की वजह से कोई सब्सटेंस बन रहा है जिसकी वजह से क्या हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से सेल क्या है, अपने आप को एक्टिव कर पा रहा है। तो उस सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी वो सब उसकी क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज़ होती है। तो अगर सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो सेल क्या कहलाता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव कहलाता है। अगर नहीं हो रही होती तो डीएक्टिवेट कहलाता। तो अब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो स्मॉलर साइज़, किस पे करता है, एक तो स्मॉलर साइज़। देखो ये इसमें ये पता करेंगे हम कि मेटाबॉलिकली एक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होती है। देखो हाई रेशियो होना चाहिए किसका, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। अगर मैं सेल के बारे में डिस्कस करूँ तो ये सेल के पार्ट है। अगर न्यूक्लियस ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म कम है और इनका रेशियो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिविटी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अगर किसी से सेल का सरफेस एरिया जा रहा है, सरफेस एरिया देखो जिसको जितनी ज़्यादा फैल के जगह मिलेगी वो उतना अच्छा काम करेगा। देखो अगर मैंने आपको कहा कि आपको ये ईंट जो है यहाँ पर बिछानी है, अगर मैं आपको बड़ा कमरा दे दूँ तो आप अच्छे से बिछा पाओगे, अगर मैं आपको छोटा सा कमरा दूँ तो आप अरेंज करोगे, घिच पिच करोगे, तो आपको टाइम लगेगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा ना बेटा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। तो मतलब क्या होना, न्यूक्लियस ज़्यादा होना चाहिए, एक्चुअली उसने ज़्यादा जगह घेरी होनी चाहिए, और एक सरफेस एरिया सेल का वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ज़्यादा अपने आप को क्या कर पाएंगे, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व कर पाएंगे। अब देखो बात आती है टाइप ऑफ सेल की। देखो हमने सेल को बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल की एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो ये जो ब्लू कलर से लाइन है ये सेल वॉल है,
और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, आपके प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये जो रेड कलर की लाइन है बाहर ये वाली, ये है बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस सेल बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल, सो डेट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ द cell. Now this part is called cytoplasm. Different type of cell organelles are present in the cytoplasm. We will later discuss about the complete detail of the cytoplasm, plasma membrane and etc. So in the center nucleus is present, it is surrounded by the nuclear membrane. ये किससे घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है. What is the function of the plasma membrane? Actually it prevent the entry and exit of the molecule because many cells are attached to with each other, so the entry and exit of the substances is prevented by the plasma membrane. Actually cell wall is present only in plant cell, so it provides strength, सपोर्ट देता है एक उसे कि क्योंकि प्लांट सेल को क्या चाहिए, ज़्यादा रिजिडिटी चाहिए कंपेरिजन टू एनिमल सेल, so the cell wall provide them a strength and the support. Now the cytoplasm is the fluid present inside the cell, so it is responsible for the exchange of different substances or producing of energy and different things. We will discuss later one by one. Nuclear membrane is present outside the nucleus and protecting the nucleus. Actually nuclear membrane nuclear membrane is basically separate the nucleus from the cytoplasm, same as plasma membrane separate the cell from the surrounding, so that the exchange and stability of the cell is maintained. So this is all about the brief introductions of the cell. Thank you.